Yes, hello 9th class students. Now I am showing you the answers of write the Java expressions for the following. Question 1, this is mat.cbrt because it is 3 here, so it is mat.cube root means cbrt a multiply b plus c multiply d because it is in brackets, so we have to write also in brackets. In question 2, p's power 3 means p into p plus q's power 4 means q into q minus 1 divided by 2 into r. So here if brackets are given, then you have to also write the brackets. Next one is question 3, minus b plus, here you can remove the bracket, minus b plus mat.sqrt b into b means this is square root because not 3 is given here, so we will write here mat.sqrt b into b minus 4 into a into c divided by 2 into a. Next is 0.05. You can use it in brackets also or without brackets also you can remove it, because if brackets not given you can remove it also the brackets, but which is given in brackets that you have to write in brackets. 0.05 into 2 multiply y into y into y divided by x minus y. Similarly here mat.sqrt m into n plus, because it is cube root 3 is there, so m mat.cbrt m plus n. In question 6, 3 divided by 4 if it is given in brackets, so you also put the brackets, and between them no symbol is there, no operator is there, so that's why we give multiplication symbol here or operator here. Then a plus b minus 2 divided by 5 into a into b. Okay, so here also no symbol is there, so we will write here multiply here also and in between a and b also. 3 divided by 8, it should be also given in brackets. If brackets given, then you also put the brackets, then multiply sign will come between them. mat.sqrt b into b plus c's power 3, then c into c into c. In question 8, mat.cbrt in brackets a plus b's power 2 b into b minus mat, because it is cube root mat.cbrt c. So here also cbrt, here also cbrt, both are cubes. Next is here mat.sqrt, then a plus b into b plus c into c into c divided by 3. In the question 10, mat.sqrt in brackets 3 into x into x plus, here it is plus, so x into x divided by a plus b. So these are the answers also. Check with your so most of the students have done answers correct, only few students have done the mistakes. So please check your answers once again and write it in your copy on your fair computer copy. Now next question is predict the output. This is the homework which I sent today, so you please understand how it has been solved. Let's see. Int m is equal to 3, n is equal to 5 and p is equal to 4. Here are three variables m, n and p. So here they have used AND operator. So students, in 8th class we have done AND, OR and NOT. These three logical operators are there. AND operator, it will work only when the both conditions are true. Which both conditions given? If they both are true, then it will print the result. And OR condition will check only one condition should be true. Means either this should be true or this should be true. दोनों में से कोई भी एक true होगी, then it will give the answer. So here according to the question, m is equal to n, m value is 3 and n value is 5. Isn't 3 is equal to 5? No. So if 3 is not equal to 5 but 4, here 5 is not equal to 4. So that condition is true, but this is false. And means both should be true, so this part will not work in the program. So if this if condition will not work, then it will go for the next if condition. Next if condition, m is not equal to, this is not symbol, m this is and not symbol. Okay, m is not equal to, and m value is 3, 3 is not equal to 5, it is true. N is equal to p, 5 is equal to 4, false, but this is true. One condition should be true, or means दोनों में से कोई भी एक true होनी चाहिए. So this is true. So the answer is m plus n. What is the value of m? 3 plus 5, 8, and m minus n, m value is 3, 3 minus 5, 2. So answer will be 8 and minus 2, because println is there, so answer will come in two lines. First line 8, then next line it will print minus 2.
Next question is question 2. A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3. What will be the output if we input 2? So here there will be two inputs, outputs. First, P value. What is the value of P? So first time according to question they are passing in the P value is 1. So first time they have passed 1 to the computer. When it will 1, it means it will go for the first case. In first case no break is there after case 1, so both these cases will work as you have done fall through statement, which I explained also in my previous video. So you have seen here a plus plus. What is the value of a? If case 1 is there, it will enter here. Case 1 a means a value is 1. 1 plus 1 कितनी हो जाएगी? 2 plus plus means it will increase by 1, so it will become 2. Then case 2 plus plus 2 means its value will become 3. So a plus plus 2 means 1 से हो जाएगी 2 a की value and 2 से हो जाएगी इसकी 3. Then break, it will come out from the loop and the output will be 2 3 3. So they have asked what is the value of a value become 2, b value become 3 and c value तो already it is 3, so it will print 2 then comma 3 then comma 3. नेक्स्ट इज देयर इफ p वैल्यू इज 3. अगर दूसरी बार केस किया और p के अंदर वैल्यू गई 3, देन विच केस विल बी वर्किंग? देन द केस 3 विल बी वर्किंग. देन इट विल बिकम c माइनस माइनस. इफ c माइनस माइनस मीन्स 3 वैल्यू, c वैल्यू इज 3, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 2. सो इट्स a वैल्यू बिकम, फिर a की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1 ही, एंड b वैल्यू इज 2 एंड c वैल्यू बिकम वॉट? c वैल्यू कितनी हो जाएगी? c में 3 में से एक माइनस हो गया 2. सो आउटपुट विल बी देन 1 2 2 1 2 2. सिंपल बात है बेटा. देखो पहले यहाँ पे p में 1 पास हुआ तो केस 1 और 2 चलेंगे बिकॉज बीच में ब्रेक नहीं है. और दूसरी बार जब p को 3 पास हुआ देन नेक्स्ट टाइम केस 3 विल बी वर्किंग. सो अकॉर्डिंगली इट विल प्रिंट द रिजल्ट. इन first time it will print 2 3 3 and second time it will print 1 2 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द कंस्ट्रक्ट एज डायरेक्टेड. स्विच केस कंस्ट्रक्ट इनटू इफ एल्स. स्विच केस को इफ एल्स में बदलना है. तो इफ में पहले एक कंडीशन ये लग जाएगी, इफ n, यहाँ पे n है एक वेरिएबल, इफ n की वैल्यू 1 है तो सम प्रिंट हो जाए. इफ n की वैल्यू 2 है तो डिफरेंस हो जाए. इफ n की वैल्यू 3 है देन इट विल प्रिंट दिस. सो वी विल कन्वर्ट दिस स्विच केस को इफ केस में कन्वर्ट करना है. कि इफ में कैसे लिखेंगे? सो इफ n इज इक्वल टू 1, आप सोचोगे n कहाँ से आया? n अगर स्विच के अंदर जो भी वेरिएबल हमने पास किया n की वैल्यू जो भी होगा वैसे ही केस चलेगा. ऐसे ही अगर इफ़ के अंदर जो भी वैल्यू पास होगी n के अंदर अकॉर्डिंगली द केस विल वर्क. सो अगर इफ़ के अंदर n के अंदर 1 वैल्यू पास हुई इट विल प्रिंट द सम ऑफ द नंबर्स. और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना क्योंकि ये एक इफ़ कंडीशन चेक करेगा. अगर एज इफ अगर n की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे जैसे कि केस 2 है आपका, तो हेयर वी विल राइट इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन कर्ली ब्रेसेस में हमने डिफरेंस वाली लाइन, ये सारी लाइंस ऐसे ही लिख देनी है एज इट इज़. सो विल राइट d इज इक्वल टू a माइनस b सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल एंड डिफरेंस इज इक्वल टू प्लस d. इन द सेम वे एज इफ तीसरी कंडीशन अगर n इज इक्वल टू 3 देन इट विल प्रिंट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो थर्ड केस में ये हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे भी आपने केस की जगह पे इफ़ लगा देना. इफ़ के अंदर वेरिएबल कौन सा चेक होगा? जो n के अंदर है. देन इट विल, इसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देना. इस पार्ट को ब्रेक नहीं लगेगा इफ़ में. देन केस 2 में यहाँ पे केस 2 की जगह वी विल राइट हियर इफ़ कंडीशन, देन वी विल राइट द डिफरेंस बिटवीन दैम. देन इन द थर्ड केस we will write else if case again if n is equal to 3 then this one, and else लास्ट में आपने डिफ़ॉल्ट केस का लिख देना wrong choice which is default case. this one is default system dot out dot print ln wrong choice. in the last we will write wrong choice. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच केस. अब उल्टा है, इफ एल्स इफ इज देयर. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्विच केस में. सो हाउ वी विल बी कन्वर्टेड? इट विल बी कन्वर्टेड इफ़ वेयर VAR इज़ द वेरिएबल नेम इक्वल टू 1. तो इसका केस 1 बन जाएगा. केस 1 में ये प्रिंट हो जाएगा डिस्टिंक्शन. केस 2 में हो जाएगा VAR इज इक्वल टू 2. मीन्स VAR अगर इसमें केस 2 गया तो यहाँ पे लिख दोगे आप केस 2 फर्स्ट डिवीज़न. इन द सेम वे केस 3 में ये, और यह आपका आ जाएगा डिफ़ॉल्ट अपार्टमेंट. सिंपली है. कौन से वेरिएबल से कंपेयर कर रहा है ऊपर? VAR से. VAR को हम स्विच में रख लेंगे. देन केस 1 वी विल राइट
सेम लाइन दिस वन, इसका हमने केस 1 बना दिया. देन वी राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट println distinction. Similarly here it will become case 2, and in case 2 then first division, in the same way case 3 second division, and default case invalid. So whatever the message is given in double quotes, you also have to write the same as written in the question. So in this way you can solve these answers. So you also write these answers in your copy. I will send PDF file also of these answers, and try to solve by yourself first on the rough copy if you understood the answers. Thank you students.